बनता या तो संजू के वजह से बनता तो ये स्कोर आपका 280 290, तो मैं पहले आपको बोल रहा था 260 270, तो 260 270 बहुत जरूरी था इस विकेट में। बट आप देख रहे हैं कि आपके पूरे वर्ल्ड कप में आपके गेंदबाजों ने कहते थोड़ा उठा हर मैच आपको जिताया, यहाँ भी कुछ करें पापा था और साझेदारी का हम जिक्र कर रहे थे, अकेली ऐसी साझेदारी जिसमें उसे बोला लगे घर में बेफालतू अकल नहीं करने को होगी फिर ज्यादा कुछ दांत काट दे फालतू के ही। बात करते हैं वहाँ पे तिलक वर्मा के बारे में और कैसे के खिलाफ पुल करने की कोशिश करते हैं और उसमें ट्रैप हो जाते हैं। ये जो विश्वास एक बार बन जाता है, ऐसे गिरते जाए बार बार विकेट एक डिलीवरी का, तो वो जो टैग इवेंचुअली अटैच होता है और कंटिन्यू होता है, वो फिर बहुत मुश्किल कर देता है। तभी ये चीज को हटाना होगा। मतलब ठीक है आप आउट हो गए, कोई भी आउट होगा, मैं नहीं कह रहा कि आप कोई डर है या कोई आप कहीं भाग कर खेले, नहीं, आपने अच्छा पुल किया, नहीं आप आउट हो गए, लेकिन किस तरीके से आउट हुए, अगर आप इस तरीके से आउट हुए तब तय करता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग खिलाड़ी है, बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो समस्या है, देखिए आप बल्लेबाज है, मैं गेंदबाज हूँ, एज ए गेंदबाज मैं कहूँगा आपने मुझे पुल मारना मारो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप 2 छक्के मार सकते हो मारिए, बट उसमें तीसरा मारने जाएंगे आप आउट हो जाएंगे। आपको छोड़ना आना चाहिए, अगर एक बाउंड्री आ गई या 6 रन आ गए, अगली बॉल छोटा आएगा तो आप छोड़ देंगे तो गेंदबाज ट्राई करेगा, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। कोचेस को बात करनी होगी, बैटिंग कोच को उनके साथ बात करनी होगी, अगले खेले हैं कोई चाय पानी पिए नहीं कर रहे, उनको बॉलें छोड़नी आनी चाहिए। केवल 2 आईपीएल सीजन्स ओल्ड हैं, तो ऑफ कोर्स तजुर्बा बहुत ज्यादा नहीं है और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अभी चाय पानी पिए नाश्ता पानी लेंगे कि नहीं लेंगे, तजुर्बे की जब कमी होती है और एक ऐसा अक्ल को नहीं अक्ल है तो ही कितना ट्रिकी हो जाता है। मुझे हाथ में काम करता है तो क्या बीच में भले चले जाते चाय पानी लगा के खाने के लिए चीजों से पार पाएंगे, कोई टेंशन मेरे को पेट लगेगी लग नहीं रही है। देखिए एक्सपीरियंस तो आपको खेलने के बाद सही गई इंसान आपने ने अच्छा प्रदर्शन किया, T20s में अच्छा किया, एक दो से मैच खेलेंगे, बहुत अच्छे प्लेयर है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखो हम तो स्टूडियो में बैठ के यही कह सकते हैं, अगर कुछ अगर है भी समस्या तो जब तक मैं पीछे से बंदा फ्री नहीं हुआ तब तक थोड़ी देती रहेगी बात से। जी बिल्कुल ऐसा ही कुछ है, क्योंकि ऑफ कोर्स चिकन एंड एग वाला डिबेट रहता है कि क्या चांसेस बहुत नहीं मिले, चाय पानी नाश्ता करके ठंडा पी के हमने ऑफ कोर्स उनकी डिस्मिसल का यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन ओवरऑल एक जो पैटर्न है उसमें क्या निकल कर आते हैं? अरे मैं छोड़ के बीच में छोड़ पहले रह चुके हैं। देखिए मेगा आपको मौके मिलते हैं, मौके आप मौकों को नहीं बुलाएंगे तो टीम में रहना बहुत मुश्किल काम रहेगा। देखिए वो बाहर क्या बातें हो रही है, कौन क्या कह रहा है, फर्क नहीं पड़ता, फर्क वो पड़ता है जो आप टीवी पे देख रहे हैं। आज मौका मिला, अब ये तो हो नहीं सकता कि कोई किसी को ये कहे कि आप 10 मैचेस अगले खेल रहे हैं, बेशक आप 10 रन ना बनाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इंडिया जैसी कंट्री के अंदर एज ए बल्लेबाज इतनी लंबी लाइन है कि आप काउंट करते थक जाएंगे लेकिन वो नंबर्स खत्म नहीं होंगे। तो यहाँ तो आपको 1 या 2 मौके मिलेंगे, अगर आप मौकों को नहीं बना पाएंगे तो दूसरा तैयार बैठा है आपकी जगह लेने के लिए, तो ये सोचना होगा संजू को। तो बताओ सिलेक्टर क्या नेगोशिएबल है कि कम रन भी बन रहे हैं तो चलो एटलीस्ट पैटर्न नहीं है डिसमिसल का, मतलब क्या है आपका दृष्टिकोण इस स्थिति में क्या रहता है? देखिए आपको रन्स बनाने हैं मेगा, आपको मतलब किसी भी तरह आप लड़े, जैसे मैंने कहा ना लड़े झगड़े, मतलब इन द सेंस वो ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं, अपने आप से लड़े, गेम खाए, बॉल छोड़े, आप रन बनाए। एंड ऑफ द डे रन्स एंड विकेट्स मैटर। किस तरह आई वो कोई नहीं देखता। स्कोर कार्ड जब आज किसी ने अगर मैच नहीं देखा ना, कल वो न्यूज़पेपर या ऐप पे जाके देखेगा ना, वो कहेगा अरे 60 रन बनाए, अब वो 60 रन के आगे ये नहीं लिखा होगा कि 3 कैच छूटे, तो यहाँ विकेट आपने ली कि आपको फुल टॉस में विकेट मिली है या यॉर्कर में विकेट मिली है। विकेट्स एंड रन्स वो जरूरी है, इमटेरियल है, कैसे वो हर अगर आपको
जी बिल्कुल। और कुछ संदर्भ में हम बात ये भी कर रहे थे कि किस तरह से जो डाउन दी ऑर्डर गेंदबाज है उनको भी योगदान देने की जरूरत है। आज अर्शदीप ने दिलचस्प पारी खेली, ही वाज हैविंग फन। देखिए टेंशन मुझे पता कहाँ है। 5 विकेट उन्होंने ली, आज 17 रन बनाए, 17 में वो छक्का लगाया जी। तो आज सारे बल्लेबाजों की क्लास लग रही होती है। आज सबको बताया जा रहा होगा कि छक्का कैसे लगाया जाता है। जब गेंदबाज अच्छी बल्लेबाजी करता है ना महिला, वो ड्रेसिंग रूम में जाके बल्लेबाजों को सिखाने लग जाता है कि देखा मैंने कैसे बल्लेबाजी। तो देखिए वो आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बल्लेबाजों से वो ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, बट उम्मीद से ज्यादा 17 रन उन्होंने बनाए। इवन अवेश खान 10 रन डबल फिगर्स में पहुंचे, कम से कम 30-32 रन लास्ट में बने हैं, जो मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लग रहा था 180 से ज्यादा नहीं जाएगा, 200 का आंकड़ा तो मैं सोच नहीं रहा था। तो ऑल इन ऑल हमारे 6 नंबर तक के बल्लेबाज इस विकेट के ऊपर आज उस तरह की बल्लेबाजी नहीं की। Gee, disappointing of course from the batters. Owners, absolutely. Owners now on the bowlers to salvage whatever could be from this match. Thanks a lot for your insights here. 212 is the target that India would look to defend. So over to live action. दिख रही बॉल कुछ जी में था। This broadcast is co-presented by Indra IT in association with Jetmosol. Skin specialist. देखिए तुम पक्का ही किया समय आउट करे जल्दी में। अब आगे खाए भी कर देंगे। नहीं ढूंढा देखे तो मैंने छुट्टियां बना तू जाके। वही तो हाथ बनाए थे अब ये टीम बनाया है जगत कैसे करा एयरपोर्ट लोग के करे आप मैंने भी सलाह बनाया है कि छूट ना दे कैच कैसे अरे ना किया सोच रहा है ढूंढ दे किया तो बेइज्जती हो जाए One word to KL Rahul, talking about exactly what India were able to do in match number 1. Get the left right, we saw some swing for Nandri Berger up front, so the left Bjorn Hendricks was the key, I think, to allow South Africa to bounce back into this के ऊपर है restrict that India ऊपर है to हां है देखो 11. It's also okay in match number 1. उतनी करिए और क्या है बहुत देर में कहना the two highest run scorers in that paltry 116 that South Africa scored in match number 1, and the damage done by Arshdeep and Avesh. A job to do again. भली बारी में ये The unnatural Tony Dizorzi strike rate, averaging runs, work to do. Reece Hendricks टोनी दे जोर coming up alongside him. जो टोनी आजमाई Right combination for South Africa. दोस्त लगे है क्या अपना जो है खाली निकाले देखो George's Park. This has proved a little tricky, I think. Saw some bounce, bit of seam movement as well. How will it play as the night time takes them effect? Hasn't done that as yet. Sun still shining in the eastern cap of South Africa. Crowd have enjoyed their afternoon, early parts of the evening so far. We've heard plenty from the resident band. Plays at St George's Park in Kishkumal. साफ पानी पी के तसल्ली हो आया अगला Started things off in Johannesburg. Wasn't at his best. He gets another opportunity for today. Barney Jew there. Local umpire says, let's play. So play we will. 212 for South Africa. Try and level the series. Man in India today, so Jamaica comes in alongside me. Just remind me of the language, English language. Yeah, nicely set up this game, and really it's more South Africa. तू नीचे कर लो तेरा गोडो कितना बारी कर दिया मैं Impressive. Winning the last match and नीचे connect करके दो well after 46 for 2, but this is South Africa batting better.
greater discipline. You would say adaptability. The strongest criticism of South African battle in the last game was on the point that they didn't quite adjust their ways as they were going about setting a target. So today, with the target in mind, they'll have a slightly different approach. Known as a pretty windy place, Beira. There's some fantastic surf beaches as well, right along that Eastern Cape that drive from Beira down to Cape Town or up to Durban. Lovely line and make a little catch. Just part of the world. 100 kilometres down the coastline, you get to a place called Jeffreys Bay, which is probably the premium surf beach of South Africa. Having a surfing competitions, it's a magnificent place with some wonderful beaches in and around the Eastern Cape, and a man who I'm not sure he spends a lot of time in the water actually. Certainly doesn't spend much time in the sun. Sean Pollock is with us. Edges away now, third. Afternoon to you, Pollock. That'll be a boundary. Yeah, understand the training facility. We talk about that surf spot. They had one massive competition there. His name was Mick Fanning from Australia. And he had to deal with an encounter of a great white. Had to get the jet skis over to him as quickly as possible as the great white tried to attack him. So that's why I don't spend too much time in the water, do we? That's because you're a sensible man, Polly. Now Indians slowly getting up with what the world does when it comes to sports. So they're taking up golf and any other sports, but surfing or surf as a pastime or a sport is not yet close to Indians. There's only one detergent name that Indians are aware of. Tati Rhodes is trying his best to introduce it, isn't he? Is he trying to give them an idea that it should be a sport? And Matthew Hayden as well. I know Matthew Hayden spent some time heading down the south of Chennai, about an hour and a bit down the south coast from Chennai, when he was at the CSK, at the Chennai Super Kings. He spent some time down the coast doing a little bit of surfing, found a couple of spots which were okay. Into the first over, 5 doubles. Connect, Kunal. Yes, sir. Hold on a second, problem? No, sir. Problem skin infection, sir. You know. सर्दी में टेम्पोसॉल से नहाओ और खुजली लाला में स्किन इन्फेक्शन दूर भगाओ। हर सीजन का स्किन स्पेशलिस्ट टेम्पोसॉल। डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 है। कौन सा बना तो? South Africa failed to do in game number 1 was just right up the top times, right out that new ball. Get a little partnership going, even if they are only 30, 35 after 10, 11, 12 overs. But none down, 1 down. They've got so much power in that batting lineup, and it just takes the wind out of the Indian sails a little bit. They can form this attack. कहाँ बनो? बनी को? कहाँ बनो? 1 मिनट में ये था बड़े यार पार। क्या छोड़ दो यार? किन्ने छोड़? Picked up the edge. Rahul diving away. Would have been an unbelievable effort if he could have got there. Yeah, good reaction from K. Rahul. Better from the person who was you're right, pitched first and then just be outside and very close to the ball because he reacted well. तो डालेगा तो आप क्या I can see when actually दो बड़े बापड़ा went with the ball with Sanju Samson. That's interesting. कोई नहीं अभी घड़ी बोला पड़ेगी बात को Yeah, good stuff by Sai Sudarshan. That's why we have Sean Pollock in the ground for us. Thanks, Polly. No problem. ज्ञानी खराब है वो बोले It's interesting to see if there's going to be as much movement as the South Africans managed to extract. It was really bowler friendly initially when they had the ball in their hand. And Zam stands to go for this one.
There's no doubt, because it wouldn't have carried, as we can see. So it was a valiant effort. You can see him just moving a little bit to the next side as the delivery's bowled, and you understand that because of the shape and the follow-up delivery. Perfect, as we saw a lot from Ashdeep at the Wanderers. He seems to have found his mojo on this tour. Hard to get a line on the South African bowling attack in game number 1, Sean Pollard. They just didn't have enough runs to bowl to, and the batters were really poor. Your thoughts on their performance today? Yeah, much better. I think much better team. You're talking about, you had Williams, you had Hendricks, all wicket takers, guys who've got the ability to make an impact, take wickets on their own, bring a bit more firepower to the attack. But I thought they were much better. I like Andre Berger. I like the thoughts that he's capable of as well. And he's included in the test side, and with the injuries, you never know, he might get a go there as well. But he reminds me a little bit of Brett Schultz, as we've discussed with Sanjay. That's a long ago. We don't have to use that many hands. He didn't hold the first over in the T20 international death. When you look at all this shaping, there's nothing better to go to from a left-hand option. Someone who can be effective on the front. Yeah, so the no-brainer with us, I think it's the one. Obvious swing bowler, nice swing bowler. Some sound maybe flick the iPad or Steve, feeling very strongly about it. But Towel was reviews a good umpire. This one Raza from Pakistan. Came around normally behind the stumps, and the most reliable source to come up with decisions on these matters. I thought it was a long way away from the thigh pad, personally. At first look, it seemed a lot. Yeah, it was a long way away from everything. In fact, I don't know what the noise was. I think he's hit his glove onto the thigh pad. Maybe that was the noise. How far away he is. It misses the thigh pad as well, I'm pretty sure. Noise was, because it was a little sound. That's good shape. Only I can't help it sometimes that I just hope Dooley's wrong for a change with all these kind of things that he notices in real time. And now Rich to like that game plan of trying to shape the like shaping into the right hand. You can see Hendricks just getting across to middle of the long stump, so it's a dangerous position to be in if you do the left hand shaping it back towards him. Good start from Ashdeep, 9 without loss. Happy birthday to you. Under that loss. Streaky shots and bowling, but we'll have the first couple. Gish to continue. Well, I guess everyone from that South African camp, they have got maybe bits of what you said after the last defeat and the lack of discipline in the batting, because now you're suddenly seeing all these batters leaving balls outside the off-stump, playing close to their body and stuff. It's a form of insanity if you do something over and over again and expect a different result. But you've got to adapt, you've got to try and play something a little bit different. They've got a test match series coming up not so long from now, so they can leave the ball. With the amount of movement we're going to see in these next 4, 5, 6 overs, it is a test match approach. If you recognise something, if something's overpitched or it's dragged down, be my guest, go after it. But if it's landed on this area and it's nipping around like that, it's the form of
poor defence that's going to get you through that initial period. It's not a massive score. They've got time. They chew up 5 overs or whatever it may be, just trying to get themselves in and try and get that new ball a little bit softer. And of course, we've seen Rohit Sharma, go after the bowling in the first 10 in 50's format, and a lot of people might be thinking it's not a bad idea to get that early sort of momentum to the innings, but this pitch is completely different. If Rohit Sharma hadn't come here, would have respected the conditions and would have batted differently. On that note of conditions, we've got 2 test matches that I believe it will create a lasting impression of India's tour of South Africa. The last 2 test matches played at Centurion in Cape Town. What can we expect? Because we've seen this pitch with a lot of life, at least for an Indian viewer. Yeah, Ashwell Prince has been selected as the batting consultant for South Africa. I've been trying to get a bit of information out of him, but he hasn't been forthcoming with most of that stuff. I mean, obviously, I would expect a service that will offer a lot of assistance to the seamers, particularly in Pretoria. But in saying that, South Africa don't have their main bowlers. The more experienced bowlers are actually sitting on the Indian front, particularly if someone like a Rabada doesn't play. So, not doing too much. The bounces are obviously the concern for India, and that's something they're not used to. What's the likely pace attack? If it goes, just adding, if it goes sideways, it makes it up difficult for everyone. And we don't have the strongest batting line. If you look at our batting line, it's probably Achilles' heel because a lot of the guys aren't playing, they're tired, the experience is kind of out of it. Attack-wise, you would think they'd be going Kutsia, Janssen, Rabada if he's fit, and maybe Andre Berger. Extended batting line, Keshamara would be the one that we'd be checking about whether he does or doesn't play in the middle of certain days. जा करने अच्छे नाय काऊ हालता हूँ उठता है बैठता है तो सवेरे उठना स्कूल के लिए फिर तेरी बात रही ज्यादा हो गया, लेकिन जब पहले तो मैंने खुशखबरी नहीं मिली। आप मदद ले सकते हैं IVF की। IVF के एडवांस साइंस और एक्सपर्ट केयर ने लाखों कपल्स के सपनों को सच किया है। मैं तक सब कर गया कितना दर्द करते हैं तो कंसल्टेशन जरूर आज तक ना खड़ा के इंदिरा IVF। They would have never seen any of them play. And trying to win a test series for the first time, that's what you can't want to see. जो बच्चा भाई ना नया हुआ है का जिंदगी में न्याय करेगा ऐसा नहीं वो पानी ढकाए चलिए वो बोले ना कि नहीं चल रहा है ढकाए चलिए अपने घर गड़े ना तो कोई बात You would want a nice surface, I think an even surface. There's actually going to पानी ढकाए चलिए ये पत्ता बने you do feel we need to make some flatter surfaces to give our batters time to kind of develop their careers and become the consistent 4 or 5 batters at the top of the order. ये बात बेटा दो Bowling attack or inexperienced bowling attack, better that they given pitches that have life in it. Because when India wasn't such a great side overseas, the only test matches that they won were pitches that had some life, which meant their bowling, which was the weakness at the time, became good. They're decent now batting, so maybe take a chance there because a flat pitch will allow Indian batters to also like their batting is going to be their weaker side of the Indian test team. Just allow them to get the runs of the board and the kind of bowling attack India have. The South African pitch that is flat is still good enough for people like Shami and Jasprit Bumrah and the others, Siraj and Ashwin and Jadeja to get 20 minutes in the test. I think if our main guys don't play, the consistency basically comes from the Indian part. This is a quality that really slips away. A bit of a hippie shot. It's kind of not what you need.
what they would benefit from is something that's quick and bouncing. But I'm not thinking going sideways because if you come to India, we've made mistakes so many times when we used to go in and thinking, well, we've got to get some returns at square. No, we've just got to get someone that lands it consistently because the conditions will be conducive enough to be able to make them effective. And I think if it does go sideways, you've got to sort of play the more than South Africa. Right thing to do. I mean, he's doing what he's supposed to do. He can need early wickets and get the ball up there. Respected delivery prior to that one. Obviously, but the inherent nature coming through because that's the shot that he played in the last match where he did a few covers. That's the other one from last year. It's 4-17 without loss. मैं तो कॉफी खाऊंगी खाएगा तो बोलेगा कॉफी खाओगे दूसरा मेरा नुकसान किया दक्षिण अफ्रीका ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं दिया है भारत ने जरूरी रहता है कि जब आप अपना नाटी और छोटा टुकड़ा आप डिफेंड कर रहे हो तो आप शुरू करने के लिए ये अपेक्षा रहती है कि बातों से दूध है को नहीं है कौन दूध है कौन दूध खाने का मतलब ये तो रोज की दूं मैंने एक किलो नहीं लो दूध पूछना पापा को मैंने एक किलो नहीं लो है कौन दूध गाँव शर्म नहीं आता मेरे अपने बच्चों सुनवा में जोड़वा नहीं तो चले दो दूध बोलिए था जाओ चलता बनो निकलने पतली गली है दूध का गाँव तो नहीं किया कमाई में करवा मैसेज प्रोग्राम का चक्कर आ रही थी करो जय आउटी आ रहे मेरे साथ इस बार मेरा नमस्कार स्वागत शुक्रिया गुरप्रीत जी हाँ जैसे आपने कहा ये एक ताकत है भारतीय गेंदबाजी जो वर्ल्ड को मिल रही है और ये कला है मुकेश के पास ये जाने जाते हैं रफ्तार ये देखें तो लगभग 130 के करीब है पर शिकागो गेंद लैंड होती है सीम पे। हाय दोस्तों ये मेरा बेटा था छोटा और ये देख रहा है टीवी। दोस्तों मैं दूध गर्म कर रही हूँ इसके पापा को दूंगी दूध। अभी खाना खाया दोस्तों तो दोस्तों आपने खाना खा लिया होगा। दोस्तों मेरा तो सर दुख रहा है बहुत ज़्यादा जोर से तो मैं तो दवाई खाऊंगी गोली। है दोस्तों मेरा सर दुख रहा है बहुत ज़्यादा जोर से दुख रहा है तो मैं दवाई खाऊंगी। फिर से यहाँ पर ओपन अप हो गए थे ओपन अप जरूर कर रहे हैं तलाश जरूर है उस पहली विकेट की
बहुत अच्छा ओवर। अब हम रिलीज की बात करें, लेकिन कैसे गेंद देखना भारतीय निकला, थोड़ा सा ऊपर हो गए थे, पिछला पाँव मेरा देखे बिल्कुल सीधा हो गया था और फंसा गया था वहां पे। अच्छा ओवर गया मुकेश का, सरदार से गेंदबाजी कर रहे हैं। टेस्टिंग टाइम्स है यहाँ पे बैटिंग के लिए, बहुत बड़ा टारगेट का सामने नहीं है, पर चुनौती रहेगी मैच में। जैसे असली को गेंदबाजी की अच्छा साथ दिया, वो हो गया है और भारी किनारा और मौका क्या गवा दिया, या गेंद कैरी हुई थी। पांच में फील्डर एक वाली बात रहेगी कि चोट लगी और 5 ओवर के बाद 17 मेरा सबसा साल भर से ज्यादा पकड़ो सोने बाबा। लेकिन फिर भी बच्चे होने की खुशखबरी नहीं मिली। आप मदद ले सकते हैं आईवीएफ की। आईवीएफ के एडवांस साइंस और एक्सपर्ट जाइती शर्म नहीं कि मैं दूध लेने गया पर इन्हें बराबर पापा के जिस संतानता को है खयाना तो और मैं चलो दिखवाई नहीं फिर समझ को बाल ले गाय से दवा ले आईवीएफ। देखो तो मैच चेहरे पे मुंबई इंडियंस की बात करें, आज जब ऑक्शन का दिन है और ये खिलाड़ी जो गए हैं वो इनसे 5 करोड़ में 4.8 करोड़, 6 करोड़, वो 20 लाख मंथली रेट का हुआ, सिवाय पंजाब के वो 20 लाख में गए हैं, 20 लाख में